water, which in which food is used by the plants, and uh, this food is used by all the living organisms, either man and human beings or animals, for their survival. Okay, so in photosynthesis, you have studied the summary reaction. Carbon dioxide combines with water in the presence of light, and important green pigment, chlorophyll, and starch is formed. A carbohydrate is formed. Along with this, oxygen is also evolved. Okay, now this is not a balanced reaction. For formation of one molecule of starch, 6 molecules of CO2 are needed and 12 molecules of water are required. So these two products, carbohydrate and oxygen, water molecule is also formed, 6 molecules of water. Okay, all these takes place in an important organelle, chloroplast. Okay, up to here. बीच में एडमिट में ज्वाइन कर लिया करें जिसको भी करना होता है, ये बार बार बैक करके हमसे नहीं होगा, ठीक है। हेलो, सुन रहे हो आप लोग? हेलो, हाँ, तो 5 मिनट में ज्वाइन रुक रुक के इतना हम बार बार नहीं ज्वाइन करवाएंगे। चलो, ओके, स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Photosynthesis, you have studied that it has two phases. One is light phase and the other is dark phase. This light phase is also Hill reaction, yeah, photophase. This is also known as hydrogen transfer phase. Whereas dark reaction is known as light independent phase. Yeah, Blackman's reaction. What happens in light phase? In light phase of photosynthesis, there is photolysis of water. Okay, I'm telling photolysis. Photo means breaks down. Sorry, photo means light, lysis means breakdown. Okay, there is breakdown of water in the presence of light. So if you are okay, any other term here for this photolysis of water, if you are using any other term instead of photolysis, it is wrong. If you are writing breakdown of water, oxidation of water, reduction of, कुछ भी लिखोगे सब गलत होगा. It is photolysis of water, not breakdown of water. Okay. ATP is formed. ATP and NADPH. This photolysis is so it occurs in the presence of light.
energy, light energy will be required. And in photolysis only oxygen is evolved. Now this ATP, it is the source of energy, while this NADPH, it is the source of reducing power. Okay. Now these two sources of energy and source of reducing power, ATP and NADPH, these two are used for the reduction of CO2 in dark. Okay. Now the concentration of CO2 in atmosphere is increasing day by day. It's a greenhouse gas, and mainly it's formed by for burning of fossil fuels. What is the concentration of atmosphere CO2 in atmosphere? 0.03 0.003%. What unit? percent. नहीं, फिर से सोच के बोलो, क्या बोले? 0.03%. 0.03%. You are telling 003. ठीक है, 0.03%. ठीक है. So depending upon our lifestyle, this CO2 concentration in the atmosphere will vary. Once it had reached 0.04%, okay, then again slowly it has come down. पता नहीं if fluctuating. Exactly see from the net. So and that in water it is. In water, how much it is? It is very high. So these hydrophytes means aquatic plants, they can produce more photosynthetic products as compared to the terrestrial ones. Okay. Now I am telling these plants, photosynthetic plants. What are photosynthetic plants? Which organisms are capable of photosynthesis? Both prokaryotes, eukaryotes, it can be lower plants, it can be higher plants. So in eukaryotes, all the higher plants, which organism, वो name the organism which comes between plants and animals? Euglena. Euglenoids. So euglenoids, these two are capable of photosynthesis. You might have heard the name of blue-green algae, which is also known as cyanobacteria, which are prokaryotes. And these blue-green algae,
These were the first organisms to have appeared on Earth during evolution. Apart from this, there are sulfur bacteria, non-sulfur bacteria. Sulfur bacteria includes purple bacteria, green bacteria. All these are capable of photosynthesis. What is the source of oxygen in photosynthesis? During photosynthesis, H2O. water. Okay, it's from the photolysis of water. This was proved by simple experiments like photosynthesis. It was allowed to proceed in heavy isotope of oxygen. O18 was taken. Then it was found that the oxygen which evolved, this oxygen which evolved, this is radioactive water, and this oxygen which is heavy isotope, which was labeled so what oxygen also was labeled here. Okay, in sulfur bacteria, instead of water, H2S is used. So the sulfur, from this sulfur, instead of water, this sulfur is evolved. Okay, this means that the water which is formed, it is comes from oxygen which is formed, which is evolved, it comes from water. Now in the beginning I have said that there are two types of photosynthesis. One is light reaction, the other is dark reaction. How can we say that there are two phases of photosynthesis? Anybody knows? Have you studied this thing? मैम एक डे के That टाइम there होता are है, two एक नाइट phases. टाइम में होता है। Uh, और जो कि डे टाइम में जो रिएक्शन होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको नाइट टाइम में एज ए प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो जिसका नाम ब्लैक रिएक्शन है। ये मैंने बोल दिया कि जो लाइट रिएक्शन में है वो जो है लाइट रिएक्शन जो है उसमें जो प्रोडक्ट्स है एटीपी एंड एनएडीपीएच उसको यूज करते हैं। इन डार्क रिएक्शन नहीं, इट इज नॉट दैट जो तुमने बोला है कि डे टाइम में होता है, एक नाइट टाइम में होता है, ऐसा नहीं ओके मैम। करते हैं। क्या होता है, ये है एक्सपेरिमेंट्स। क्या होता है, reaction at a given temperature
upon reaction at 10 degrees Celsius lower. Yes, temperature पे जिससे कोई reaction here is photosynthesis. We are studying about photosynthesis. So photosynthesis at a given temperature divided photosynthesis at 10 degrees Celsius lower. ठीक है, तो this is temperature coefficient. So for photosynthesis, it was found that once there was one, and at the other time the temperature coefficient was found to be 2 or 3. When light treatment was given, it was 1, and when it was 2 or 3. From this, it was concluded that there are two phases of light photosynthesis. Yes. Regarding this, the experiment was conducted by light. You know what is intermittent? Okay. Not continuous. This was not continuous. Warburg in 1920. Warburg in 1920. What he did, he gave light flashes. ठीक है, light flashes for very short time, 1/10 of a second. For a very short time. ठीक है, it was given to one thing, most important thing, just remember this thing. Most of the experiments on photosynthesis, they were conducted in मैम आपकी आवाज कट रही है। alga is singular. Okay, so hello. Can you please Hello. नहीं आवाज आ रही है? मैम आवाज ब्रेक हो रही। हेलो, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? अभी ठीक है। Okay. So light flashes for a very short time. 1/10 of a second was given to the green algae, Chlorella vulgaris. ठीक है, a green algae, and the other algae is Sandesmus. Obliquus. QUUS. ठीक है, so these two algae, most of the experiments were conducted on these two algae. Okay, it was found
that photosynthetic yield was higher when intermittent light was given, not continuous, for a short period of time, light, and then again dark. Light, dark. It matlab altered. Light dark period was altered. Then it was found that photosynthetic yield per second, it was higher as compared to when continuous light or continuous dark was given. एक बार ये ऐसे करके नहीं, लगातार बहुत लंबे समय तक लाइट में रखा, फिर लंबे समय तक डार्क में, तो वहां फोटोसिंथेटिक यील्ड जो था इट वाज लेस. ओके अप टू हियर. यस मैम. हाँ, अब I told that this photosynthesis, it requires light, green pigment, and this occurs in a special organelle. This organelle you have already studied. What is that? Chloroplast. Okay. ठीक है. So this chloroplast, in this chloroplast, photosynthesis occurs. We have already studied the structure and its function. In short, function in detail, just we will see. तो लाइट फेज कहाँ होता है? Stroma. स्ट्रोमा लैमेला. स्ट्रोमा लैमेला क्या हो जाएगा? थाइलेकोइड में मैम, थाइलेकोइड. थाइलेकॉइड में. इंटरनल लेयर ऑफ थाइलेकोइड. कहाँ? इंटरनल लेयर ऑफ थाइलेकोइड. इंटरनल लेयर ऑफ थाइलेकॉइड. चलो ठीक है. ग्रान one of you told that it is in stroma lamella. This is stroma lamella. It is okay. मैं बस छोटा सा पूरा complete figure I am not drawing. Only the grana and the stroma lamella. These all grana. Thylakoid. ठीक है. तो of course you told thylakoid lamina. ठीक है. Membrane. Later on we'll see. ठीक है. तो ये जो फोटो सिस्टम 1 होता है, this occurs here and the other occurs in here, thylakoid. Of course, ठीक है. Okay, up to here. Hello. Hello. Yes, ma'am. ठीक है. चलो. Okay. Quantum yield.
What does quantum mean? Number of oxygen molecules released per light quanta absorbed. Number of oxygen molecules released per light quanta absorbed. Ma'am, your voice is not coming. No, I'm not saying anything. If it's okay up to here, then I'll proceed further. If you have written up. Okay? Yes, ma'am. Now, Warburg in 1932, he reported that two light quanta it will drive one electron. Okay? Yes, ma'am. And four electrons, they are, excuse me, they are required for reduction of one molecule of CO2. Two light quanta, it will drive one electron, and four electrons are required to reduce one molecule of CO2. Hence, it was concluded that 8 light quanta, it is required for evolution of one molecule of oxygen, or for we can say reduction of one molecule of CO2. Got up to here? Okay, up to here? Men, repeat it again. Warburg in 1932, he had reported that two light quanta, it will drive one electron. हम एक चीज ये चीज टू लाइट, चलो ठीक है लिखो बाद में देखते हैं. And four electrons are required for reduction of one molecule of CO2. Therefore, ये देखते हैं डिटेल में, हम लोग देखेंगे फोटो सिस्टम 1 और 2 है ना, उसको देखोगे कैसे लाइट एनर्जी पड़ता है दोनों सिस्टम में, फोटो सिस्टम में, और जो उसमें कंपोनेंट्स हैं प्लास्टोक्यूनोन, वो सब कैसे उस एक्साइटेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, फिर समझ में आ जाएगा. 4 electrons are required for reduction of one molecule of CO2. It means 4 into 2, 8 light quanta, it is required for reduction of one such CO2 molecule, or we can
say 8 light quanta is required for evolution of one molecule of oxygen. ठीक है? So the quantum yield will be 1 by 8. Number of light quantum yield क्या है? Number of oxygen molecules released per light quanta absorbed. ठीक है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है 8 लाइट क्वांटा से, तो how many oxygen molecules will be evolved from one light quanta? In terms of percentage, it will be 12 point something. ठीक है? What is quanta? क्वांटा हम कहते हैं ना, क्वांटा इतना लाइट क्वांटा चाहिए. क्वांटा है, फोटोन है, यही है. पढ़े हो ना फिजिक्स में आप लोग? Yes ma'am, packet of energy. Packet of energy, ma'am. Yes, it is packet of energy. Light travels in the form of streams of different distinct particles, which is known as packets of energy. Okay. Another thing is photosynthetic unit. एक क्लास में सामने पढ़ने में अच्छा लगता है, ऐसे पीछे छोटे बोर्ड पे इतना मजा ही नहीं आता है. फोटोसिंथेटिक यूनिट या क्वांटाजोम, ये क्या है? Its definition, it says that the smallest, no, you may note down, I'll not be writing here. The smallest group of collaborating pigment molecules the smallest group of collaborating pigment molecules necessary to affect a photochemical act. That is the absorption and migration of a light quanta to a trapping center where it promotes the release of an electron. I'm repeating, the smallest group of collaborating pigment molecules necessary to affect a photochemical act, that is, the absorption and migration of a light quantum to the trapping center, where it promotes the release of an electron. Okay, so you have studied in that in thylakoid membrane there is a light harvesting center and the reaction center, light harvesting center, accessory pigment, antenna pigment, all these things you have studied. ये है ना, पढ़े हो थोड़ा सा? तो वही है Yes ma'am. यूनिट, वही है फोटोसिंथेटिक यूनिट. तो इमर्सन EMERSON
and Arnold in 1932. They had reported that about 2,500 chlorophyll molecules will fix one CO2 molecule. 2,500 chlorophyll molecules are required to fix one molecule of CO2. Evolution of one molecule of oxygen. Hana wahan? Hello? Yes, ma'am. Yes. You have seen just now that 8 light quanta is required for one evolution of one molecule of oxygen, या फिर we can say for reduction of one molecule of CO2. But Salisbury and Ross, they have reported that it's not 8 light quanta, but it is 10 light quanta. Instead of 8, 10. They will reduce one molecule of CO2. ठीक है? So here we are taking this value, and later on we will see the ATP requirement for that phase of photosynthesis. Why they are telling 8 or 10. ठीक है? So here we are taking 10 light quanta. It is required for reduction of one CO2 molecule or for evolution of one molecule of oxygen. It means 10 flashes of light is to be 10 flashes of light is required to reduce one CO2 molecule. ठीक है? So one photosynthetic unit, it will contain 2,500 upon 10. ओके, एक फोटोसिंथेटिक यूनिट में 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक CO2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर रहा है, और सैलिसबरी ने कहा कि 10 लाइट क्वांटा जो है एक CO2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है. तो वन फोटोसिंथेटिक यूनिट इट विल कंटेन दिस मच 2500 divided by 10. This will come to 250 chlorophyll molecules. ठीक है? And this 250 chlorophyll molecules is the physiological unit of function. This is known as photosynthetic unit. Chlorophyll unit 250 chlorophyll molecules. So in one quantazome, in one photosynthetic unit, it contains 250 chlorophyll molecules, both A and B. In addition to these chlorophyll molecules, they also contain some other compounds like carotenoids, phenols, phospholipids, etc. Okay, up to here? Yes, ma'am.
हेलो, ठीक है. So I told this photosynthesis occurs in the presence of a green pigment chlorophyll. ठीक है. So this photosynthetic pigments, basically chlorophyll, and one more pigment, carotenoids. These are required. These carotenoids to prevent photooxidation of chlorophyll molecules. So the in chlorophyll A, chlorophyll, there are two types of chlorophyll molecules, chlorophyll A and chlorophyll B. Okay. Their structure is different. Chlorophyll A का molecular formula, it is C55. Remember this one, you have studied H72 O5 N4 Mg, and that of chlorophyll B is C55 H70 O6 N4 and Mg. So the difference is in hydrogen and oxygen molecules. Okay, number of hydrogen and oxygen. Apart from these, there are others also in algae, but we are taking only of higher plants, so chlorophyll A and B, I'll be talking only about. Okay. Yes, ma'am. So this is chlorophyll A and B. Their color is also different. This chlorophyll A, it is bluish black. ठीक है. While chlorophyll B, it is greenish black. A is bluish black while B is greenish black. Then the other photosynthetic unit, it is carotenoids. Now these carotenoids, they are of two types, carotene and xanthophyll. Carotene ये है C40H56, while xanthophyll is C40H56O2. Carotene is C40H56, while xanthophyll is C40H56O2. So xanthophyll, in addition to carbon and hydrogen, it also contains oxygen. Xanthophyll, in addition to carbon and hydrogen, it also contains oxygen, whereas carotene contains only carbon and hydrogen. So we can say that xanthophyll is a oxygen derivative of carotene. Can we not? Hello? Hello? Yes, ma'am. ठीक है. And I told that the function of these carotenoids is to protect chlorophyll against photo damage by excessive light.
So the light energy, it will be absorbed by these carotenoids and then transferred to chlorophyll A molecules. Now, structure of this chlorophyll molecule. Uh, this chlorophyll, it has a porphyrin head and a phytol tail, and this is embedded in thylakoid membrane. It has a porphyrin head and a phytol tail. This tail is embedded in thylakoid membrane. ठीक है? We say chlorophyll, it is a derivative of magnesium porphyrin. बेटर टू से फीओ, 5 पोरफायरिन होते हैं इसमें, इसलिए फीओ पोरफायरिन, PHAEO, PHAEO. Chlorophyll, it is a derivative of magnesium thioporphyrin. In humans, hemoglobin is present, isn't it? And that it is instead of magnesium, iron is present. ठीक है, ब्लड में आयरन होता है ना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, तो इन हीमोग्लोबिन आयरन पोरफायरिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये पोरफायरिन क्या है? It is a cyclic tetrapyrrole structure. Cyclic tetrapyrrole structure. Porphyrin is a cyclic tetrapyrrole structure. And what is pyrrole? It is a heterocyclic organic compound. ठीक है, chlorophyll, it is a derivative of magnesium thioporphyrin. Porphyrin, it is cyclic tetrapyrrole structure, and pyrrole, it is a heterocyclic organic compound. मैम पायरोल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्या? हाँ, भी बना रहे हैं, बता रहे हैं. ठीक है, यस मैम. तो हम इसको नीचे से ऊपर चलेंगे. सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि पायरोल का स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, फिर थियोपोरफायरिन कैसे बनेगा और उससे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. तो सबसे पहले हमने कहा पायरोल इज अ हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. बेंजीन में 6 साइड होते हैं. ठीक है, यहाँ पर पायरोल में 5 होंगे. मैं एक रफ आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ
कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है बुक से बनाना, यहाँ पर फिगर ड्रॉ करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पर CH, यहाँ भी CH, ये 4 जगह CH है, यहाँ 5वीं जगह NH, ठीक है। ये है पायरोल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब हम कहते हैं कि porphyrin, chlorophyll, it is a derivative of magnesium porphyrin। तो सबसे पहले हम porphyrin बनाएंगे। porphyrin क्या है? इट इज साइक्लिक टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। हमने एक पायरोल रिंग बना दिया, ठीक है। अब पायरोल से porphyrin बनाएंगे, ठीक है। ये porphyrin जो होगा स्पाइरोल का साइक्लिक मैनर में होगा, और 4, ठीक है। तो मेरा अच्छा नहीं बन, तो ये हम देख रहे हैं 4 porphyrin बन गया इन अ साइक्लिक मैनर। ठीक है, और जो 1 2 3 4 and chlorophyll, it says that it is a derivative of magnesium pheoporphyrin। हमने तो अभी porphyrin बनाया, तो 5वां porphyrin कहाँ, पायरोल कहाँ होगा? 3/4 के बीच में, यहाँ पर। It will not be here। बॉन्ड्स रहेंगे ऐसे। This is the 5th pyrrole structure। ओके, सो ये pheoporphyrin बन गया। अब इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ मैग्नीशियम pheoporphyrin। कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोग बुक से देखना, यहाँ पर नाइट्रोजन था, है ना, चारों पायरोल के नीचे जो था वो एक नाइट्रोजन था, NH, ठीक है। तो दिस नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा मैग्नीशियम के साथ, सेंटर में मैग्नीशियम होगा, चारों पायरोल के बीच में मैग्नीशियम होगा। ओके, हेलो हेलो, यस मैम। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर यहाँ तक क्लियर है? हेलो, Yes, ma'am. सारे स्टूडेंट्स लीव कर रहे हैं, सिग्नल प्रॉब्लम है या भाग रहे हैं? ठीक है, हेलो, Yes, ma'am.
अटेंडेंस अभी ले ले क्या? यस अटेंडेंस ले मैम। लेंगे, बाकी लोग का दोबारा हम बनाएंगे नहीं फिर। आप लोग यहाँ रोल नंबर लिख ही रहोगे ना नाम के सामने, तो मेरा ये स्क्रीनशॉट से अटेंडेंस बन जाएगा, तो उसको देख लो, मॉडिफाई कर लोगे तो अगली बार से हमको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है? मैम नहीं सब तो सबका नेम मेंशन किया हुआ रोल नंबर नहीं सबका तो नहीं ना है सब में, सब लोग रोल नंबर में है मैम। मेंशन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैम नहीं हाइफन है के बाद सब में। दिया हुआ है सब। स्क्रीनशॉट में आता नहीं है। मैम मैम वो नेम आगे लिखा हुआ है मैम। मैम हम लेके ग्रुप पे डाल देंगे मैम हमारा। नहीं वो चीज तो ठीक है, उसमें नहीं आता है ना स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लोरोफिल ए एंड बी में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए में ये जो सेकेंड रिंग है, अभी जो मैंने लाइन डाला वहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सॉरी, क्लोरोफिल ए में क्लोरोफिल ए है ना, एल्डिहाइड किसमें है? मैं कंफ्यूज क्यों करने लग गई। लेट मी चेक इन द मैम क्लोरोफिल ए में CH3 होता है और क्लोरोफिल बी मिथाइल में है अल्डिहाइड ग्रुप होता है। सेकंड ना। यस मैम कंफर्म है। खोलने दो मुझे, कहाँ गया है? ओके मैम। हाँ, मिल गया। यस, क्लोरोफिल ए में मिथाइल है एंड यहीं पर इसी सेकेंड पायरोल रिंग के पास this methyl group, it will be replaced by aldehyde group. ठीक है? This is the basic difference between the structures of chlorophyll A and B. ठीक है? अब जैसे हमको कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक्सट्रैक्ट करना होता है, अगर इन जनरल क्लोरोफिल निकालना है तो उसके लिए बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है? जो बहुत मोस्ट कॉमन स्कूल में पढ़े होंगे तो DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। DMSO से without extraction, without reticulating, without grinding, we can extract chlorophyll. We can quantitatively analyze chlorophyll. ठीक है? लेकिन A और B दोनों को अलग अलग करना है तो अब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। डिफरेंट वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। बट इफ वी डोंट हैव DMSO, acetone, then instead some other chemical, petroleum ether,
ये ए के लिए चाहिए और बी के लिए मिथाइल एल्कोहल। क्लोरोफिल ए के लिए एक बार फिर से बोल दें केमिकल का नाम। ए पेट्रोलियम ईथर एंड बी के लिए मिथाइल एल्कोहल। ओके मैम। ठीक है, तो ये जो हमने अभी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाया है ये कंप्लीट नहीं था। ए और बी में डिफरेंस बताने लग गए। ये सिर्फ हमने फॉस्फाइरिन हेड बनाया था। ठीक है, दिस porphyrin head in addition it has a phytol tail also। हम 4 ही बना रहे हैं, चलो 5वां आप लोग बनाए हुए होंगे। तो ये जो porphyrin ring it has a phytol tail। ओके, तो ये जो 4th वाला रिंग है, 4th रिंग में यहां से फाइटोल टेल होता है। CH2 CH2 एंड बहुत सारा हम सिर्फ हाइड्रोजन इसका फाइट प्रोपायोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नाइन 13 CH2 CH2 and C20 H39। ओके, प्रोपायोनिक एसिड साइड चेन C20 H39। ओके, अप टू हियर। यस मैम। अब सेंटर में जो यहाँ पर मैग्नीशियम रहता है उस मैग्नीशियम का क्या रोल है यहाँ क्लोरोफिल में? इट हेल्प्स टू फॉर्म एग्रीगेट्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। हमने क्वांटाजोम में देखा है कि 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक क्वांटाजोम में प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो एक क्वांटाजोम में जो 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है कैसे उसका एग्रीगेशन होगा, एक साथ बॉन्डेड रहेगा, अलग अलग नहीं। तो वो मैग्नीशियम उसका रोल है यहाँ पर। ठीक है, अब क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस कैसे होता है बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि एक इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन और दूसरा है एक क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये एक कंपाउंड बनाता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, तुम लोग डिटेल में लिखना, हम बता देंगे। ALA
ALA का पूरा नाम है, सॉरी ये तो स्टेबल कंपाउंड है। इसके पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एडीपी एसिड। ठीक है, ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल को एंजाइम ए, it forms an unstable compound alpha amino beta keto adipic acid. Glycine plus succinyl coenzyme A, it forms alpha amino beta keto adipic acid in the presence of enzyme ALA synthetase. ALA synthetase. ठीक है, और ये जो ALA synthetase है, it is the first enzyme in chlorophyll biosynthesis. और जो अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है अल्फा एमिनो बीटा कीटो एडिपिक एसिड, ये फिर इमीडिएटली ALA बनाता है। ये ALA क्या है ये लिख लो, डेल्टा एमिनो लिबुलानिक एसिड। AMINOLEBEULENIC, डेल्टा एमिनो लिबुलानिक एसिड। ठीक है, हेलो, यस Yes, ma'am. तो ये डेल्टा एमिनोलिबुलानिक एसिड आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस it will form chlorophyll. ALA, after a series of reactions, it will form chlorophyll. First, protochlorophyll is formed. And from this protochlorophyll, this chlorophyll will be formed. So this, obviously in the presence of light, all these will take place. So this protochlorophyll, it is devoid of 2 hydrogen atoms. जो हमने अभी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, हेलो, यस है मैम ना, जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा अभी हमने, उसमें जो 4th पायरोल रिंग है, उसके 7th and 8th कार्बन में वो एब्सेंट रहेगा हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि वहां से क्या है, पायरोल फाइटोल चेंज आ रहा है। 7th पोजीशन से 4th रिंग के फाइटोल, पायरोल रिंग के 4th, क्या बोलते हैं, सॉरी, 4th पायरोल रिंग पे जो 7th और 8th कार्बन है, 7th कार्बन के पास वो फाइटोल चेन है। ठीक है, इसलिए वहां पर एक हाइड्रोजन और 8th पे एक हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगा प्रोटोक्लोरोफिल में। ठीक है, और तब फिर उससे क्लोरोफिल बनेगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है सबको? I'll take the attendance now. Roll number 1. बोलते roll number 1.